Welcome dear students, class 7, science, chapter 4, topic heat, video part 3. In this video, part 3 video, we will study about convection and radiation along with land breeze, sea breeze. So, we will start with convection. So, convection, under transfer of heat, we have seen conduction, first method of transferring heat. Second method is the convection. Convection generally occur in gas as well as liquid. So, definition, convection refers to the transfer of heat from the hotter part of a liquid or a gas to its colder parts due to the actual movement of the particles of liquid or gas itself. So, particles, every matter has some particles. It is made up of atom and particles, small molecules, etc. So, when we are supplying heat to liquid or gas, the particles of that particular liquid or gas, they are starting movement, and this movement transfers the heat. Okay, let us perform activity 7 to understand heat transfer from by convection. So in this activity, the aim is to demonstrate that water transfers heat by the process of convection. Materials required: a beaker, a tripod stand, a burner, water, potassium permanganate crystals. Now the procedure, beta. Take a beaker and fill it about half with water. Add a small crystal of potassium permanganate to water, which soon dissolve to impart. It will give, when it will dissolve, potassium permanganate will dissolve, it will impart purple color to the water. Place the beaker on a tripod stand and heat it on a burner as shown in figure 4.14. Convection current in water. Now what we will observe, that we will find purple streaks of hot water rising from the bottom of the beaker to the surface of water, from bottom towards the surface, and then sinking down that circular path as shown in figure above, sinking downward near the walls of the beaker. This process occurs again and again. Due to this, the whole water in the beaker gets heated uniformly with same temperature. Now the conclusion, these circulatory movements of water are called convection currents. So the water in the beaker is heated by convection currents. Now we know that water and air are poor conductors of heat and cannot transfer heat by conduction. Conduction generally occur in solids. However, they transfer heat by convection. Water and air, they can transfer heat by convection. This process of convection is possible in liquids and gases because the particles in them can move about freely. Convection is not possible in solids because the particles in them are fixed. They are very close to each other, fixed at a place and cannot move freely. Okay.
So now we'll see another activity, that is activity number 8. Aim of this activity to demonstrate that air can transfer heat of a source only in the upward direction. Now the materials required: a lighted candle. The procedure what we will going to follow: take a lighted candle and fix it on a table as shown in figure 4.15. Keep one hand at a safe distance above the flame and the other hand on the sides of the flame, figure 4.15. Observation will be: we will find that the hand above the flame feels hot, means the energy is passing to upwards, ऊपर की ओर हीट जा रही है, feels hot, but the hand on the side does not. So conclusion will be: the air just above the flame gets heated up. जैसे ही फ्लेम के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होती है, it becomes lighter and rises upward. हवा गर्म होने पे हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करती है. इस कॉन्सेप्ट को बेटा प्लीज़ याद रखना आप लोग, बिकॉज लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में यही कॉन्सेप्ट काम आएगा. द कोल्ड एयर फ्रॉम अबव sinks down and takes the place of hot air. गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठी तो उसकी जगह खाली हो गई नीचे. there will be the blank space when the hot air will move upward, but the place will be taken up. वो जो खाली जगह है गर्म हवा द्वारा जो हुई है तो उसको कौन फिल करेगा? कोल्ड एयर उसमें आके फिल कर देंगी उस जगह को. द कोल्ड एयर विल फिल दैट गैप, फिल दैट स्पेस. ओके बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. दिस कोल्ड एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस अपवर्ड. व्हेन द एयर गेट्स हॉटर or warm air, it will move upward. Please keep this concept in your mind. Again, the cold air from above moves downwards. Thus, convection currents are set up in the air above the flame, and more heat gets transferred upward. Air cannot transfer the heat from the source on either side of the flame or in the downward direction. Now we'll see about a room heater. A room heater heats air in a room by setting up convection currents in the air. During winter season, we are using room heater in north. Convection currents play an important role in the formation of interesting natural phenomena like sea breeze and land breeze in the coastal region. Now we'll see sea breeze. Sea breeze, as you can see in the figure beta 4.17, the direction of air from the ocean or sea towards the land during daytime. Sea breeze occur only at daytime. So we'll start. During the daytime, when the sun shines, the land gets heated much more quickly than the sea water. पृथ्वी जो हमारी धरती है दिन के समय सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा गर्म होती है, पानी की अपेक्षा ज़्यादा ज़मीन गर्म हो जाती है. ओके, सो द हॉट एयर अबव द लैंड राइजेस अपवर्ड्स. तो ज़मीन पर, धरती पे जो हवा है
वो गर्म होने के कारण क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, गुब्बारे जैसे हल्के हो जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरने पे। और इट मूव्स और राइजेस अपवर्ड, और ऊपर की ओर उठ जाती हैं गर्म हवाएं। एंड कूलर एयर फ्रॉम ओवर द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड इन द फॉर्म ऑफ अ कूल ब्रीज। और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो समुद्र से, ओशन फ्रॉम द सी और द ओशन, इट मूव्स टूवर्ड्स द लैंड, ज़मीन की तरफ, धरती की तरफ ये ठंडी हवाएं बह आती हैं। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हवाएं समुद्र की ओर से धरती की ओर आती हैं। द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी एज शोन इन द फिगर 4.17 टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। जो हवाएं दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ आती हैं उन्हें सी ब्रीज कहते हैं। The breeze blowing from the sea towards the land is called sea breeze. Now we'll see what is land breeze. Opposite of sea breeze, that is land breeze. Land breeze generally occur at night time. The hot land cools much faster than the warm sea water. रात के समय धरती और लैंड जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है एज कंपेयर वार्म सी वाटर, समुद्र के गर्म पानी की अपेक्षा जल्दी से लैंड ठंड, ज़मीन धरती ठंडी हो जाती है। सो द हॉट एयर अबव द सी वाटर राइजेस एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टू टेक इट्स प्लेस। जैसे ही गर्म हवाएं समुद्र से ऊपर की ओर उठती हैं उनकी जो खाली जगह है, रिक्त स्थान जो भरा ब्लैंक स्पेस है, वो कौन फिल करेगा? ठंडी हवाएं। और ये ठंडी हवाएं कहाँ से आएंगी? दिस कोल्ड एयर विल ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज as shown in figure 4.18, land breeze from land to sea. The sea breeze blows only during daytime, please keep in mind beta, and the land breeze blows only during night time. Clear? Okay, now we'll see another important method, process, that is radiation. Conduction we have seen beta, convection is over, now radiation we will see. Radiation is the process of transfer of heat from a hot body to a cold body by means of heat rays. For example, sun rays. Without the presence of any material medium between them, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी सपोर्ट के जो हीट रेज हैं, किरणें हैं, उनके माध्यम से, with the help of that heat rays, transfer of heat comes under radiation. The heat transferred by radiation is called radiant heat or thermal radiation. Clear? Okay. Every hot object gives out invisible heat rays, जो अदृश्य दिखाई न दे ऐसी हीट रेज इन ऑल डायरेक्शन। जो भी गर्म ऑब्जेक्ट हैं वो अपने चारों तरफ, चारों दिशाओं में हीट रेज, गर्म किरणें प्रकाशित करते हैं, फैलाते हैं। दे आर स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। हॉट ऑब्जेक्ट ओनली, हॉट है तो ही। हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन एज शोन इन फिगर 4.19. The sun is extremely hot and gives out heat rays in all directions. These heat rays travels through vacuum. Vacuum means no presence of air. The area where is no air is present, that is known as vacuum. VACWM. In Hindi, this is known as nirvat.
through vacuum between the sun and the earth at a very high speed and reach the surface of the earth. All the objects on the earth receives heat energy and get heated. और इस तरीके से सूरज की रोशनी जैसे ही धरती पे पड़ती है, वस्तुएं और जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं वो दे आर फीलिंग हीट. द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. Okay. The invisible heat rays which transfer heat by radiation are called infrared rays. These rays called infrared rays. Now we'll see the topic, that is absorbers and emitters of heat radiation. हीट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले, एब्जॉर्ब कर लेने वाले, अपने अंदर ले लेने वाले एब्जॉर्बर्स कहलाते हैं. एंड इमिटर्स द ऑब्जेक्ट्स विच आर गिविंग आउट स्प्रेडिंग हीट एनर्जी. Okay, so we'll see here the amount of heat absorbed or emitted by an object depends on its color. So color plays very important role. Objects having dark colors absorb more heat radiation than the object having light colors. जो डार्क कलर हैं वो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को अपने अंदर एक्यूमुलेट करेंगे. ठीक है. बट द लाइटर कलर्स दे इमिट, दे विल नॉट एब्जॉर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लैक ऑब्जेक्ट इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड अ बैड रिफ्लेक्टर. रिफ्लेक्ट करना, रिटर्न करना, वापस कर देना. रिफ्लेक्टर ऑफ हीट रेडिएशन. सो अ ब्लैक ऑब्जेक्ट इज अ गुड एब्जॉर्बर, while a white object, सफ़ेद ऑब्जेक्ट कोई या सफ़ेद कलर, white object is a poor absorber and a good reflector of heat radiation. This much clear beta? Okay. Now people prefer to wear white or light colored clothes in summer because they absorb less heat from the sun. In fact, white clothes reflect most of the heat rays from the sun. Thus, wearing white clothes make us stay cooler. और ठंडे वाइट कलर के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े हमारी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं because of this reflection, light reflection property. During winter, people prefer dark colored clothes because dark color absorb more heat from the sun and provide warmth to the body during the winter season. So here beta, we have finished our final part 3 of science chapter 4, heat. Thank you for your patience and as well as your valuable time. Thank you. God bless you. Thank you.